Hello everyone. Today we are solving exercise 4.2. Let us start with the first question. Test whether the following functions are increasing or decreasing. तो हमारे पास functions है और हमें check करना है कि वो increasing है कि decreasing है. Now to do this, first we find the derivative of the function. तो अगर derivative का value positive आता है तो फिर it is an increasing function. अगर derivative negative आता है then it is a decreasing function. लेकिन फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि इधर डेरिवेटिव ढूंढना होता है. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस विल बी 3x² माइनस 6 इंटू 2, सो 12x प्लस 12. Okay, and I can take 3 common over here, so I get x² minus 4x plus 4. Now this over here is x minus 2 the whole square. See, even if you think about splitting this, you would get that 4x को you would write as minus 2 into minus 2. So therefore here you will write x minus 2 the whole square. Now I know that x minus 2 the whole square is strictly greater than 0 for all x belonging to r minus 2. 2 हटा देना होगा तो फिर strictly greater than 0 होगा. अगर 2 होगा तो equal to 0 भी होगा. ठीक है, तो हमें अगर इंक्रीजिंग चाहिए तो वी आर लुकिंग एट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड हेंस इन दिस पार्ट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. इफ आई मल्टीप्लाई बाय 3 ऑल्सो तो फिर ऑल्सो इट विल बी ग्रेटर देन 0. Therefore, I can say that f dash of x is greater than 0 for this same range. Okay. Therefore, f of x is an increasing function. In r minus 2. Now let's do the next question. In the second question, we have that f of x is equal to x minus 1 by x, where x belongs to r and x is not equal to 0. अगर x 0 होता तो फिर ये डिफाइन नहीं कर पाते ना, इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है. फर्स्ट लेट अस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x. सो दिस वुड बी 1 माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. बराबर, दिस इज x रेज टू माइनस वन आगे लेंगे एंड देन x रेज टू माइनस वन तो माइनस 2 आता है करके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर. सो दिस इज देयरफॉर इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ ओवर हियर x स्क्वायर इज समथिंग दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, लेकिन ऑफकोर्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह पे इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. बराबर, so therefore 1 divided by x square will also be greater than 0 for all x belonging to r where x is not equal to 0, and that means that 1 plus 1 by x square is also greater than 0 for all x belonging to r. Now I'll write minus 0. ठीक है, so this is what, this is the value for f dash of x. So therefore f dash of x is greater than 0 for all x belonging to r minus 0. वैसे भी x is equal to 0 है ही नहीं है इसमें, so we can just simply say that f of x is an increasing function. Okay, now let us do the next question. In the third question, we have that f of x is equal to 7 by x minus 3. x belongs to r and x is not equal to 0. So यहाँ पे again we have 7 divided by x. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? It will be -7 क्योंकि ये x का -1 divided by x square आएगा, and here -3 का डेरिवेटिव is going to be 0. अभी x square is something that is always greater than 0 for all x belonging to r and x is not equal to 0. And therefore -7 by x square has to be lesser than 0. ठीक है, for all x belonging to r and x is not equal to 0. Okay, so therefore अगर ये negative है, that means that f dash of x is negative for all x belonging to r minus 0. Okay, therefore we can say that f of x is decreasing. Now let us look at the next type of questions.
Find the values of x such that f of x is an increasing function. So f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. So यहाँ पे we have to find where is x increasing. Okay. So basically f dash of x कहाँ पे positive है. So पहले तो f dash of x ढूंढना पड़ेगा. So we are getting that f dash of x is equal to 6 into x square minus 5x plus 6. So therefore, since f of x is increasing, f dash of x should be greater than 0. That implies that 6 into x square minus 5x plus 6 should be greater than 0. इसको split कर सकते हैं हम लोग. This will be 2 into 3. तो -2 minus 3. ठीक है. So we can write this as x square minus 2x minus 3x plus 6. That 6 no I have taken on the other side. तो वो 0 के साथ multiply हो गया. This is x minus 2 into x minus 3. And this is greater than 0. Okay. Now when the product of two numbers is greater than 0, we have done this in the solved examples as well, that अगर AB हमें greater than 0 मिलता है, then we have two cases. दोनों ही 0 से बड़े हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होंगे. ठीक है. Both these things should happen together. Either दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव. Like I had given that example कि 3 into 5 भी 15 होता है एंड -3 into -5 भी 15 होता है. ठीक है. दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव. सो लेट अस कंसिडर केस 1. केस 1 इज व्हेन both are positive, that is x minus 2 is greater than 0 and x minus 3 is greater than 0. Okay. So what does that mean? That x is greater than 2 and x is greater than 3. So we have to find a number जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. उसके लिए ड्रॉ करना इज द इजीएस्ट वे. सो सपोज दिस इज 2, दिस इज 3. ओके. x इज ग्रेटर देन 2 मतलब all these possible values. ठीक है. एवरीथिंग टू द राइट ऑफ 2. x इज ग्रेटर देन 3 मतलब on this side. Where are the common points? They are here, right? So this implies that x should be greater than 3. क्योंकि अगर x 3 से बड़ा है तो फिर ये तो सेटिस्फाई हो जाता है एंड वो 2 से भी बड़ा होगा ही ना. बट यहाँ बीच वाले पॉइंट्स आर नॉट बिगर देन 3, तो दीज वी विल नॉट कंसिडर. ओके. नाउ केस 2. केस 2 में बोथ आर नेगेटिव. सो x minus 2 is lesser than 0 and x minus 3 is lesser than 0. So we get that x is lesser than 2 and x is lesser than 3. Fine. So now in this case, again I draw. So 2 इधर, 3 इधर. So x is lesser than 2, x is lesser than 3. Okay. Common region is this part. So this implies that x is lesser than 2. Fine. Now therefore we have that the function is increasing in these two cases. जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होता है एंड जब x का वैल्यू 2 से छोटा रहता है. ठीक है. So therefore f of x is increasing when x is greater than 3 or x is lesser than 2, or you can say that f of x is increasing in the set. We can say 3 से बड़ा है मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से सब कुछ बड़ा, यूनियन विथ -infinity to 2. ठीक है. In this set it is an increasing function. Okay. Now let us do the next question. In the second part we are given that f of x is equal to x square plus 2x minus 5. और हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है कि ये कब इंक्रीजिंग है. तो पहले तो डेरिवेटिव ले लेते हैं. सो वी गेट दैट f dash of x is equal to 2x plus 2 बराबर. उसके अलावा तो 0 है, -5 का डेरिवेटिव. सो वी हैव टू चेक दैट व्हेन इज दिस ग्रेटर दैन 0. सो इफ f of x is increasing, then that implies that f dash of x should be greater than 0.
So that implies that 2x plus 2 should be greater than 0. बराबर 2 को दूसरे साइड पे लेके गए तो 2x is greater than -2 आएगा and therefore x is greater than -1 आएगा. ठीक है. So that means that this function is increasing when x is greater than -1, or we can say that when it is from -1 से लेके infinity तक. Okay. So therefore f of x is increasing. You can say when x is greater than 1, that is when x belongs to -1 to infinity. Okay. And that is our answer. ये क्योंकि इसका डेरिवेटिव लीनियर आ रहा था इसलिए हम लोग को फैक्टराइज करने का नीड भी नहीं पड़ा. ओके. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ इन द थर्ड पार्ट वी आर गिवन दैट f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. So therefore f dash of x is equal to 6x square minus 30x minus 144. Okay. Now since f of x is increasing, therefore this will imply that f dash of x is greater than 0, and that implies that 6 common लेती हूँ. So x square minus 5x minus, यहाँ से 6 common लेंगे तो this is 12 into 12, right? तो it will become just 12 into 2, which is 24, is equal to, is not equal to, is greater than 0. Okay. The 6 will go to the other side, and now I have to factorize 24 in order to get 5. So I'll do that as 8 into 3. Okay. So then we get x square minus 8x plus 3x minus 24 is greater than 0. Okay. So now if I take x common, I get x minus 8 plus 3, again x minus 8 is greater than 0. Therefore we get x plus 3 into x minus 8 has to be greater than 0. Now the product of two numbers is greater than 0, मतलब दोनों इधर पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है. So case 1, when both are positive, मतलब x plus 3 is greater than 0 and x minus 8 is also greater than 0. So that implies that x is greater than -3 and x is greater than 8. Okay. On drawing, अगर यहाँ पे 0 है तो -3 लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, 8 राइट हैंड साइड पे होगा. ठीक है. एंड -3 से बड़ा है मतलब ये सब आ सकता है, और 8 से बड़ा है मतलब ये सब कुछ. कॉमन रीजन यहाँ पे है. सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 8. ओके. नाउ केस 2, दोनों ही नेगेटिव होंगे. ठीक है. So in that way we have x plus 3 is lesser than 0 and x minus 8 is lesser than 0. So this implies that x is lesser than -3. ठीक है. And x is lesser than 8. तो इन दोनों से कम है, तो अभी तो अब तक तो पता चल ही गया होगा कि it will be lesser than -3 only. ठीक है. हमने इतने सम्स कर लिए कि अभी पता चल गया है कि जब ऐसे दो नंबर्स होते हैं, जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा आता है कॉमन वाला रीजन, और जब दो नंबर्स होते हैं उन सब में छोटे वाले नंबर से कम वाले नंबर में आता है कॉमन रीजन. सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेसर देन -3. ओके. सो देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग. When x is greater than 8 or x is lesser than -3, that is when x belongs to the set. तो -3 से कम है मतलब -∞ to -3 यूनियन 8 से लेके infinity तक. Okay. And that is our answer. Now let us look at the next set of questions. Find the value of x such that f of x is a decreasing function. अभी यहाँ पे we have to find all such values of x जहाँ पे वो decreasing होगा. ठीक है. तो सेम प्रोसीजर है, बस वो ग्रेटर देन 0 के बदले लेसर देन 0 होगा. ठीक है. सो फर्स्ट फंक्शन इज f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. Same as the last function, right? So f dash of x will be 6x square minus 30x minus 144.
ठीक है, अब वहां पे जो आंसर आया है ना उसका एकदम कॉम्प्लीमेंट्री आंसर इधर आना चाहिए, क्योंकि अगर उधर इंक्रीजिंग है तो बाकी का जो रह गया उधर डिक्रीजिंग होगा ना, तो ऐसे आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो अभी सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, दिस implies that f dash of x is lesser than 0. Okay, so this implies that 6 into x square minus 5x minus 24 is lesser than 0. 6 को दूसरे साइड पे लेके जाओ, इसको फैक्टराइज करना भी आता है ना हमें ऑलरेडी, दिस इज जस्ट माइनस 8x प्लस 3x करते, तो वी वुड गेट x minus 8 into x plus 3 is lesser than 0. Now when the product of two numbers is negative, तब क्या हो सकता है? तो जब a b नेगेटिव होता है तब क्या केसेस हो सकते हैं? a लेसर देन 0 है एंड b इज ग्रेटर देन 0, दोनों का ना ऑपोजिट साइन होना चाहिए। एंड दूसरा केस क्या है? a 0 से बड़ा रहेगा एंड b विल बी लेसर देन 0. ओके, सो देन in these two cases we write that case 1 is lesser than 0. So a मतलब x minus 8 is lesser than 0 and x minus 3 is greater than 0. Okay, so in this case it becomes that x is lesser than 8 and x is greater than minus 3. So let us draw this to see. तो minus 3 इधर आता है, 8 इधर होगा, x is lesser than 8 मतलब सब कुछ ये आ सकता है, x is greater than minus 3 मतलब everything to the right side. So there is a common region that is between minus 3 and 8. So this implies that x is lesser than 8 and it will be greater than minus 3. Okay, now case 2. Case 2 में x minus 8 will be greater than 0 and x plus 3 is lesser than 0. ठीक है, opposite. So here x is greater than 8 and x is lesser than minus 3. Okay, now when x is greater than 8 and x is lesser than minus 3, तब क्या होता है? इस साइड पे होगा and minus 3 के इस साइड पे होगा. There is no such x जो दोनों को satisfy कर सकता है, so this case is not possible. Okay, so therefore f of x is decreasing when x is between minus 3 and 8. That is when x belongs to minus 3 comma 8. Second part में we have that f of x is equal to x raised to 4 minus 2x cube plus 1. So first let us calculate f dash of x. तो f dash of x will be equal to 4x cube minus 6x square बराबर. अभी अगर f of x को डिक्रीजिंग रहना है तो इसको नेगेटिव होना चाहिए. तो मैं कॉमन ले रही हूँ 2x स्क्वायर, सो आई गेट 2x माइनस 3 इज लेसर देन 0. ठीक है, now 2x minus 3 if this is lesser than 0 then that implies that this part only has to be lesser than 0, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है बराबर. so therefore 2x minus 3 should be lesser than 0 and that implies that x should be lesser than 3 by 2. That's it. Okay, so therefore f of x is decreasing. That is when x belongs to minus infinity to 3 by 2. Okay, and that is our answer. Now let us solve the last question in this exercise. So here we have that f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 84x minus 7. Okay, now f dash of x will be 6x square minus 30x minus 84. Okay, so we can take 6 common. So in that case we get 6 x square minus 5x and यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 1 ज़ा, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 4 ज़ा. ठीक है, so we are getting that f dash of x is equal to this.
Now since f of x is decreasing, f dash of x should be negative. So this implies that 6 into x square minus 5x minus 14 is lesser than 0. And abhi, how do I split 14 to get 5? It has to be 7 into 2, right? और 6 को भेज सकते हैं दूसरे साइड पे, तो x square minus 7x plus 2x minus 14 is lesser than 0. Okay, and on taking common I get that this is x minus 7 into x plus 2. ठीक है, दिस इज लेसर देन 0. नाउ 2 केसेस लेना पड़ेगा वापस, जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और दूसरा वाला क्या होगा जब ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है. ठीक है, सो केस 1 is when x minus 7 is lesser than 0 and x plus 2 is greater than 0. So this implies that x is lesser than 7 and x is greater than minus 2. Okay, so therefore इधर -2 इधर 7, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड -2 से बड़ा मतलब ऐसे होगा. सो इन दोनों के बीच में, दैट इज द कॉमन रीजन. So this implies that x is lesser than 7 and greater than -2. And case 2 is when x minus 7 is greater than 0 and x plus 2 is lesser than 0. In that case, we have that x is greater than 7 and x is lesser than -2. And हमें पता है that this case doesn't work out. So this is not possible. Therefore, we can say that f of x is decreasing when x is between -2 and 7, that is when x belongs to -2, 7. Okay. So with that we have solved exercise 4.2. I hope you have understood the concept of increasing and decreasing functions.